Hello and welcome back to this channel. Dear students, this topic is steady state error. We'll be solving numericals related to steady state error. Earlier, I have created the video for the derivations of steady state errors. If you haven't yet watched that video, do watch it because all the prerequisites are required for solving the numericals as far as the steady state error is concerned. Now, I have made a list of formulae. Only these formulae are required for solving the numericals. तो ये formulae आपको याद रखना है. Simple formulae, just refresh the things. KP को बोलते हैं positional error coefficient. It is limit as s tends to 0 g of s into h of s. KV is velocity error coefficient, limit as s tends to 0 s into g of s h of s. मतलब ये सेम इक्वेशन, इसको s से मल्टीप्लाई करोगे तो kV आ जाएगा. K is acceleration error coefficient, इसको s स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो Ka आ जाएगा. तो Kp, Kv, K ये तीन फॉर्मूले हैं. उसके बाद I have written the list of formulae for ESS. ESS को बोलते हैं steady state error. So ESS for step is A upon 1 plus Kp, for ramp A upon Kv, for parabola A upon Ka. और मैंने ए भी लिस्ट लिखा है कि तीन स्टैंडर्ड इनपुट्स यूज करते हैं कंट्रोल सिस्टम्स में. फर्स्ट इज स्टेप, या ऐसे एक्सप्रेस करते हैं ए इंटू यू ऑफ टी. अगर यूनिट स्टेप मेंशन किया है तो सिर्फ यू ऑफ टी नोटेशन होगा, और द नोटेशन कैन बी लाइक दिस: ए फॉर टी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, रैम्प इज गिवन बाय ए टी and parabola is given by a by 2 t square. Naturally a is some constant. Now without wasting the time, let us start solving the numericals. जैसे before starting this session, let me clear one thing. ये numericals बहुत simple है, आपको skip नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत important part है. Okay, so given question is unity feedback system. अब इसका क्या मतलब है unity feedback? देखो normally equation ऐसे देते हैं g of s into h of s. G of s is the gain of forward block, h of s is the gain of feedback block. So unity feedback है, मतलब h of s का वैल्यू 1 है. इससे इस कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, मतलब लिखते वक्त h of s नहीं आएगा. दैट्स व्हाई ओनली g of s इज गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, सो यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज ट्रांसफर फंक्शन. जैसे मैंने बताया ये एक्चुअली g of s into h of s होना चाहिए, लेकिन यूनिटी फीडबैक है इसलिए h of s डिलीट किया, g of s ये इक्वेशन दिया है. इवैल्यूएट सिस्टम टाइप Kp, Kv, Ka एंड स्टेडी स्टेट एरर फॉर स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल्स. अब सिस्टम टाइप कैसे निकालना है? लुक एट द गिवन इक्वेशन. यहां पे स्टैंडर्ड नोटेशन ऐसा होता है s रेस टू n. अब s का जो पावर है, यहां पे स्टैंडर्ड नोटेशन ऐसा होता है s रेस टू n, और उसके ब्रैकेट में और कुछ टर्म्स रहेंगे. What I'm telling to you, S का जो पावर है that decides the type of system. यहाँ पे S टर्म ही नहीं है, मतलब as if it is S raised to 0 because something raised to 0 is 1. So अगर मैं यहाँ पे S raised to 0 लिखूंगा, just one added term, then we know that S raised to 0 is 1. But this power of S represents type of system. एग्जाम में लिखना कैसे है? Since there is no S raised to term, or you may write like this, make it more simple. The power of s raised to n is s raised to 0. Since this power is 0, it is type 0 system. This is answer of first part. You may well make it in more simple. Just you can simply write it like this: since n is equals to 0, it is type 0 system. Okay, this is first part. Then we have to calculate Kp, Kv and Ka. I have written the ready-made formula. So the calculations are pretty simple. First we will calculate Kp. Kp is limit as s tends to 0 g of s into h of s. Do not get confused. जैसे मैंने अभी बताया ये यूनिटी फीडबैक है तो h of s 1 है, इसलिए सिर्फ g of s दिया है. Okay, so let us put the values in the formula. So limit as s tends to 0, it is 1000 s plus 8 upon s plus 7, नेक्स्ट ब्रैकेट s plus 9. अब सिंपल ट्रिक है, जहां जहां s है वहां पे 0 पुट करना है, बिकॉज लिमिट इज s टेंड्स टू 0, मतलब यहां जहां पे भी s है ये टर्म, इसके बदले में 0 पुट करेंगे. सो नेक्स्ट कैलकुलेशन विल बी ये 1000 एज इट इज रहेगा, 0 plus 8 upon 0 plus 7 and 0 plus 9.
ये आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है. सो दिस आंसर विल बी 126.98. दिस इज द वैल्यू ऑफ केपी. अब ये एक पार्ट हो गया. केपी कैलकुलेट किया हमने, केवी कैलकुलेट करना है. केवी के लिए सिंपल फॉर्मूला याद रखना है. यहाँ पे मैं केवी करता हूं तो यहाँ पे एस आएगा, एस इंटू अर्लियर फॉर्मूला. इसका मतलब है सेम इक्वेशन जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ये इक्वेशन सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे एस आएगा. अब देखो बहुत सिंपल टेक्निक है. जैसे हमने अभी एस इज इक्वल टू जीरो पुट किया था, यहाँ पे दिस थिंग, मतलब ये मैं ऐसे करता हूँ, दिस थिंग will be multiplied with 0 because s is equals to 0. s एक additional term है ना, so this answer will be 0. That means value of kv, I will write the answer separately. We got kp is equals to 126.98. kv is equals to 0. Next part we have to calculate ka. अब के कैलकुलेट करने के लिए सेम फॉर्मूला, यहाँ सिर्फ एस स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे भी एस स्क्वायर आएगा. सेम लॉजिक, एस का वैल्यू जीरो पुट करना है तो ये इक्वेशन एज इट इज आएगा. यहाँ एस स्क्वायर मतलब जीरो आएगा तो इसका भी आंसर जीरो आ जाएगा. सो वी गॉट के ए इज इक्वल्स टू जीरो. दिस इज वन पार्ट. वी हैव कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑफ के पी, के वी एंड के ए. अब नेक्स्ट पार्ट कैसे सोचना है. वी हैव थ्री स्टैंडर्ड इनपुट्स. कौन कौन से स्टैंडर्ड इनपुट्स है. Unit step or rather step signal, ramp signal and parabola signal. Now we need to do the calculation of steady state error. तीन standard input signal consider करना है, step, ramp and parabola. So we have a direct formula for step signal. ESS is equals to A upon 1 plus KP. This I am doing it for step signal. So A remains as it is, A upon 1 plus Kp. We have got the value of Kp, it is 126.98. Now see, we don't have the value of A. So in the exam you may write like this. If it is unit step, then A is equals to 1. So it becomes 1 upon 1 plus 126.98. So this answer will be 0.0078. This is the value of steady state error for unit step signal. Next part for ramp signal. Again we have a separate formula for ramp signal. ESS is equals to A upon KV. But KV is equals to 0, so we will get A upon 0. In the last video I have told you these rules. If it is A upon 0, answer is infinity. So steady state error for ramp signal is infinity. Then for parabola signal, so for parabolic signal ESS is A upon KA, capital A upon KA. Again same logic, A upon 0 which is infinity. So we will get only steady state error for step signal. For ramp and parabola steady state error is 0, infinity. Next problem. A unity feedback system has transfer function. This is the given transfer function. G of s is 10 into s plus 1 upon s square in the bracket s plus 2 s plus 10. Same like the previous case. It is unity feedback system. That means value of h of s must be 1. That's what we discussed in the last numerical. Determine system type, error coefficients and steady state error for input. Now only variation is in this numerical some input is given. This is the equation of given input. Okay. First part is we have to decide the system type. Make the thing simple. कैसे याद रखना है. डिनोमिनेटर में सिर्फ s का टर्म सोचना है. इसका पावर कितना है. Its power is 2. So you will be writing answer like this. Since in the denominator power of s term, maximum power of s term is 2, it is type 2 system. Type 2 system. Last numerical में यहाँ पे s term ही नहीं था. That means it was as if it was s raised to 0. So we wrote it is type 0 system. Here the term is s square. So it is type 2 system. Now let us evaluate next part. Calculate error coefficient. Error coefficient means like the previous sum, I need to calculate Kp, Kv and Ka. So like the previous sum, Kp is limit as s tends to 0, g of s into h of s. Same formula I am using. Now let us put the values. Limit as s tends to 0,
g of s into h of s. H of s is 1. So g of s, I just have to put the equation of g of s only like the previous sum. S square s plus 2 s plus 10. Now wherever s is there, I need to put the value 0. So it becomes 0 plus 1 upon 0 into 0 plus 2, 0 plus 10. Irrespective of other brackets, see, or to make the thing simple, I will just simplify it further. It is 10 because 0 plus 1 is 1 upon this 0 remains as it is. This bracket becomes 2, this bracket becomes 10. But it is 10 upon 0 into this becomes 20. So this becomes 10 upon 0. Do remember like this, something upon 0 is always infinity, like a upon 0 is always infinity. So anything upon 0 is infinity. Or make it more simple, whenever you are getting 0 in the denominator, answer becomes infinity. So I will write the answer of Kp over here separately. So Kp is equals to infinity. Next part on the same lines, I need to calculate value of Kv. So equation of Kv is just same formula, you need to multiply it with s. So it becomes s into this term. Now see, अब देखो ये स्क्वायर का एक s और एक s कैंसिल हो गया. अगेन गो ऑन पुटिंग द वैल्यू, इट्स सिमिलर टू द प्रीवियस कैलकुलेशन. या जहां पे s है वहां 0 पुट करना है. रिमेनिंग थिंग्स आर एज इट इज, ये भी एज इट इज आएगा बिकॉज 0 स्क्वायर इज 0 और ओनली 0 इज अगेन something upon 0 becomes infinity. So this answer is again infinity. So I have got answer of Kv is equals to infinity. Next part, I want to calculate Ka. Last was Kv. Now I want to calculate Ka. Formula is s square into this equation. So it becomes s square. That means this was already s square. This term and this term gets cancelled. Now we need to simplify it further. So this is 10 into 1 upon this is 2 into 10. So very simple, 10 upon 20, that is 0.5. So value of Ka is equals to 0.5. Now important part is calculate steady state error for this input. How to identify which type of input is this? That's to make the thing simple, I have written the formulae notations for standard signals. Keep in mind, step मतलब ये a u of t or only a, or it will be mentioned like this, a for t greater than or equals to 0. Ramp is a of t, parabola is a by 2 t square. Compare the corresponding terms. यहाँ पे a दिया है और 1 दिया है, 1 is similar to a, so it is step signal. ये 4t है, 4t यहाँ पे देखो 4t मतलब 80 है, तो ये है रैंप सिग्नल और a का वैल्यू होगा 4. ये स्टेप सिग्नल है, यहाँ पे a का वैल्यू होगा 1 बिकॉज स्टेप इज गिवन बाय a u of t और a, और यहाँ पे सिर्फ 1 दिया है. और ये जो टर्म है, दिस टर्म t square by 2, दिस विल बी सिमिलर टू a by 2 t square, मतलब ये पैराबोला होगा. सो दिस इज अ पैराबोलिक इनपुट एंड वैल्यू ऑफ ए देखो a by 2 t square है, यहाँ क्या दिया है t square by 2, मतलब वैल्यू ऑफ a विल बी इक्वल्स टू 1. अब स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करना है. वी हैव ऑल द फॉर्मूला ऑफ स्टेडी स्टेट एरर. गिवन इनपुट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री, तो तीनों के स्टेडी स्टेट एरर ऐड करना है. मतलब क्या करना है, पहला स्टेडी स्टेट एरर, आई विल राइट फाइनल स्टेडी स्टेट एरर लाइक दिस, ESS इज इक्वल्स पहला स्टेप है. स्टेप के लिए क्या फॉर्मूला है, a अपॉन 1 प्लस kp. फर्स्ट आई विल राइट द फॉर्मूला. सो इट इज a अपॉन 1 प्लस kp प्लस रैंप के लिए क्या फॉर्मूला है, a अपॉन kv. पैराबोला के लिए क्या फॉर्मूला है, a अपॉन ka. अब क्या कैसे सोचना है, go on putting the values of a. So it is a is 1 अपॉन 1 प्लस kp का वैल्यू कितना है अपने पास, इंफिनिटी. तो पहला टर्म आ गया 1 अपॉन 1 प्लस इंफिनिटी, प्लस सेकंड टर्म a 4 है अपॉन kv इज इंफिनिटी, प्लस थर्ड टर्म a अपॉन k, a 1 है, k का वैल्यू है 0.5. अब ऐसे याद रखना है, समथिंग अपॉन इंफिनिटी, मतलब और एक फॉर्मूला मैं ऐड कर देता हूं.
समथिंग मतलब a अपॉन इंफिनिटी इज ऑलवेज जीरो, मतलब ऐसे याद रखना है। इंफिनिटी अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो आंसर हमेशा जीरो होगा। सो यहाँ पे इंफिनिटी डिनोमिनेटर में आ रहा है बिकॉज इंफिनिटी प्लस वन इज इंफिनिटी, वन अपॉन इंफिनिटी बिकम जीरो, फोर अपॉन इंफिनिटी बिकम जीरो। मैंने कैसे बताया, डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आए तो आंसर जीरो होगा, सो दिस बिकम जीरो प्लस जीरो, और इसका आंसर आएगा वन अपॉन 0.5 दैट इज 2. So final steady state error is equals to 2. This is the steady state error for the given input which was combination of step, ramp and parabola. तो याद रखना है, सिर्फ ये नोटेशंस आप याद रखोगे ना, दिया हुआ जो इनपुट है इसके साथ कंपेयर करना है, अकॉर्डिंगली यू जस्ट हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए और फिर इस फॉर्मूला में पुट करना है। बिफोर दैट यू नीड टू कैलकुलेट केवी, केपी, केवी एंड के फॉर एवरी सम। नाउ लेट अस सॉल्व वन डिफरेंट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये थोड़ा अलग न्यूमेरिकल है। डिटरमिन स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट एंड स्टेडी स्टेट एरर फॉर स्टेप इनपुट if unity feedback system has g of s. We discussed it while solving earlier numericals. Unity feedback means h of s is 1, so only g of s is given, k upon s into s plus 2, s plus 4 plus 10 and k is given as 20. मतलब as if it is 20 upon this thing. Also find k if ESS for step input is 0.8. अब ये second part हम लोग बाद में solve करेंगे. First we will talk about this thing. We need to calculate static error coefficient and steady state error for step input. अब देखो KP, KV और K तीनों कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे सोचना है, सिर्फ स्टेप इनपुट मेंशन किया है। स्टेप इनपुट मींस वी हैव दिस फॉर्मूला ऑफ ESS जिसमें सिर्फ हमें KP चाहिए, सो वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट KP बिकॉज स्टेप इनपुट इज क्लियरली मेंशन्ड, नो अदर इनपुट्स आर मेंशन्ड, दैट्स व्हाई आई विल बी डूइंग कैलकुलेशंस ऑफ KP ओनली। तो KP का फॉर्मूला अपने पास है, सो इट इज लिमिट एज h टेंड्स टू 0 g of s into h of s. Simply we need to put the values. Do remember ये k अपॉन दिया है और k का वैल्यू 20 दिया है, so I'll be putting the values. लिमिट एज h टेंड्स टू 0 20 क्योंकि k का वैल्यू 20 है, 20 अपॉन s into s plus 2 s plus 4 plus 10 like the previous sum. जहां जहां s है वहां 0 पुट करना है, सो दिस 20 रिमेन्स एज इट इज डिवाइडेड बाय 0 into 0 plus 2 into 0 plus 4 plus 10. अब देखो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा बिकॉज 0 into एनीथिंग इज 0, लेकिन ये 10 है, सो इट बिकम्स 20 upon 10 which is equals to 2. So value of KP is equals to 2. So I will write the answer over here. So we got KP is equals to 2. Now we have to calculate value of ESS for step signal. So we have the formula ESS is equals to A upon 1 plus KP. Now it is asked to calculate steady state error for step input. Actually step input is a u of t, but whenever value of a is not given, consider it as unit step. Unit step means a is equals to 1. If value of a is not given, always consider it is a unit step, and unit step means value of a is equals to 1. So this equation becomes 1 upon 1 plus kp, that is 1 upon 1 plus 2, so it is 0.33. This is the answer of first part. What we did, we calculated the value of KP and ESS for the step input signal, which was similar to the previous numerical. Okay, now remaining part. Remaining part, what is asked in the remaining part? Find K if ESS for step input is 0.8. अब देखो ये रेडीमेड फॉर्मूले है ESS कैलकुलेट करने के लिए. वी हैव द जनरल इक्वेशन टू कैलकुलेट ESS, मतलब ये जनरल इक्वेशन यूज करके हमने ये फॉर्मूले डिराइव किए हैं. अब I need to make use of this generalized equation of ESS. So we have ESS is equals to limit as s tends to 0 s into r of s upon 1 plus g of s into h of s. अब देखो स्टेप इनपुट दिया है और वैल्यू ESS का दिया है 0.8, तो यहाँ पे LHS साइड में ESS के बदले में I will be putting 0.8 is equals to लिमिट एज s टेंड्स टू 0. अब कैसे सोचना है,
आर ऑफ एस ऐसे देखो, डू रिमेंबर द नोटेशंस. आर ऑफ टी इनपुट होता है हमेशा. आर ऑफ टी इज नॉट रैंप सिग्नल. आर ऑफ टी इज द इनपुट इन कंट्रोल सिस्टम and C of t is the output in control system. Do remember these notations for control system. In signals and systems we usually take R of t as a ramp input, but in CS control systems R of t is input signal. अब R of S जो होता है that is Laplace transformation of input signal. ऐसे सोचो, what is given input? Step input, जिसका Laplace transform we have already discussed in previous sessions. It is 1 by S. So we have got the Laplace transform. R of S is equals to 1 by S, and it is unity feedback system, so we know that H of S is equals to 1. So put the values S into R of S is 1 upon S divided by 1 plus G of S. G of S is this entire thing, so K upon S into S plus 2 S plus 4 plus 10. So this is the equation which we got after putting the values. अब क्या करना है, ये s और ये s कैंसिल हो गए. लिमिट इज इन टर्म्स ऑफ s, जहां जहां s है वहां लिमिट 0 पुट करना है. सो आई विल बी राइटिंग लाइक दिस. ये पूरा टर्म 1 हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस k, देन 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 4 प्लस 10. अब देखो ये पूरा टर्म, आई विल यूज अनदर कलर, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा बिकॉज 0 इंटू एनीथिंग इज 0. तो आई विल गेट द न्यू इक्वेशन दैट इज 0.8 इज इक्वल टू, अब लिमिट मतलब मैंने s के बदले में 0 पुट किया है. सो न्यू इक्वेशन विल बी 1 अपॉन 1 प्लस k, और ये टर्म 0 हो गया, k अपॉन 10. अब आगे ये न्यूमेरिकल सिंप्लीफाई करना है. अब यहाँ पे 10 LCM लेना है. सो आई विल राइट द न्यू इक्वेशन 0.8 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 प्लस k अपॉन 10. मतलब न्यू इक्वेशन विल बी दिस 0.8 इज इक्वल्स टू, आई एम रेफरिंग दिस, ये 10 ऊपर आ जाएगा, 10 अपॉन 10 प्लस k. Our aim is to calculate k. So take the cross multiplication. 0.8 into 10, it becomes 8 plus 0.8k is equals to 10. Therefore 0.8k is equals to, ये यहाँ पे ट्रांसफर किया is k. So k is equals to 2 upon 0.8. If you solve this, value of k will be 2.5. So dear students, this was the problem where we used some different technique to calculate the answer. Actually ये सब importance problem है. इसके बाहर का variation मतलब we have covered all the types of possible variations. So only the thing is that you need to remember all these formulas. So that's it for today's session. This topic is for the subject control and systems. So thanks, and thanks a lot.